गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 170 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साउथ कोरिया में जो है गैदर हुए हैं। फिफ्थ और फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के लिए एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाई जाएगी प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग मरीन पोल्यूशन। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें इसका, तो यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड किया जाना चाहिए 2022 में। और इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई इस जो है ट्रीटी को जो है वो डिस्कस करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। 175 नेशंस 2022 में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होना तो चाहिए प्लास्टिक पोल्यूशन को 2024 तक एंड करने के लिए। हम 2024 में जो है ये ट्रीटी लेकर आएंगे। तो ज़रूरत क्या है इसकी? प्लास्टिक की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो डबल हुई है साल 2000 से लेकर 2019 के बीच में। अगर हम देखें 2040 तक ये 700 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी। प्लास्टिक डीकम्पोजिशन को लगभग 20 से लेकर 500 साल तक लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा प्लास्टिक है। और इसका जो है वो रिसाइकलिंग सिर्फ 10% होती है। एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो लगभग 400 मिलियन टन्स है और वो 62% से इंक्रीज़ हो सकती है बाय 2050। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो लीक भी होता है रिवर्स में और ओशंस में। तो केमिकल्स जो हैं प्लास्टिक के अंदर वो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करते हैं, कैंसर करते हैं, डायबिटीज़ करते हैं और तरह के रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट्स करते हैं। 2020 में प्लास्टिक्स जो हैं वो 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस को केटर करते थे और अब जो है वो एमिशंस जो है वो 20% तक जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे बाय 2050 अगर यही ट्रेंड रहा तो। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का, ठीक है। तो अब इसका नेगोशिएटिंग टेबल में क्या जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो इन टॉक्स का एक मोटिव तो ये है कि ग्लोबल रूल्स बनाए जाएं ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन अक्रॉस इट्स लाइफ साइकिल जो है उसको डील किया जा सके। तो इसमें जो है प्रपोज जो मेजर्स किए गए हैं वो हैं कि बैन किया जाए स्पेसिफिक प्लास्टिक्स को, बाइंडिंग रिसाइकलिंग टारगेट सेट किए जाएँ, रेगुलेट किया जाए केमिकल एडिटिव्स को प्लास्टिक में, ठीक है। डिस्कशंस इंश्योर करना चाहती हैं कि एक फेयर ट्रांजिशन हो वर्कर्स के लिए भी, कम्युनिटीज़ के लिए भी और लाइवलीहुड्स के लिए भी। कंट्रीज़ डिवाइडेड हैं किन की इश्यूज़ पर, खासकर प्रोडक्शन कैप्स पर, ठीक है। तो ऑयल और गैस रिच कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया और इवन इंडिया भी जो है वो स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन लिमिट्स के फेवर में नहीं है। लेकिन रवांडा, पेरू और ईयू वो कहते हैं कि पोल्यूशन रिडक्शन जो है वो एग्रेसिवली होनी चाहिए, ओके। तो इंडिया जो है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस के फेवर में नहीं है, खासकर पॉलीमर प्रोडक्शन की। इंडिया कह रहा है कि फाइनेंशियल एड दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दो, टेक्निकल सपोर्ट दो, तभी जो है वो ट्रीटी जो है वो सही से इन्फोर्स हो सकेगी। तो जो हार्मफुल केमिकल्स पर जो डिसीजन लिए जाने वाले हैं वो साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर हों और उसको डोमेस्टिकली ही रेगुलेट किया जाए, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गूगल क्रोम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो और कई यूएस की स्टेट्स जो हैं वो प्रपोज कर रही हैं कुछ मेजर्स लेने के लिए ताकि गूगल की जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है उनको जो है वो एड्रेस किया जा सके, इंक्लूडिंग पॉसिबल सेल ऑफ क्रोम वेब ब्राउज़र। तो इसमें जो है यूएस के जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के जो जज हैं उन्होंने बोला कि गूगल एक मोनोपोलिस्ट है और वो अपनी मोनोपोली मेंटेन करना चाहता है। तो ये एंटी ट्रस्ट केस गूगल के अगेंस्ट फाइल किया गया है, एक सिग्निफिकेंट लीगल बैटल कंपनी की जो है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, जो कि सर्च और एडवर्टाइजिंग मार्केट्स में सेंटर्ड है, ओके। तो इस केस में जो है मल्टीपल लॉ सूट्स फाइल किए गए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा और इसमें अक्यूज़ किया गया कि गूगल जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स का यूज़ करता है ताकि अपनी डोमिनेंस बनाकर रख सके ऑनलाइन सर्च, एडवर्टाइजिंग और अदर सच मार्केट्स में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने लॉ सूट फाइल किया 2020 में गूगल के अगेंस्ट। अगस्त 2024 में फेडरल जज ने रूल किया कि गूगल ने जो है शर्मन एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट किया है और मेंटेन की है अपनी मोनोपोली सर्च और एडवर्टाइजिंग मार्केट्स में। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो कंसिडर कर रहा है कि ब्रेकअप किया जाए गूगल के बिजनेसेस को, इंक्लूडिंग क्रोम, गूगल प्ले और एंड्रॉयड ऑल्सो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो गूगल को सू भी कर रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए और डिपार्टमेंट जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या गूगल जो है वो अपनी पावर जो है कॉम्पिटिटर्स को एज आउट करने के लिए यूज़ करता है कि नहीं, ओके। तो यूएस जो है यूएस की एजेंसीज़ ने अक्यूज़ किया है मेजर टेक कंपनीज़ को जैसे अमेजॉन, मेटा या फिर गूगल को कि वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड हैं। और डिपार्टमेंट का कहना है कि गूगल ने जो है डिपार्टमेंट ने और कई स्टेट्स ने गूगल को 2020 में सू भी किया था इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए कि वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगस्त 2023 में जज जो अमित मेहता हैं उन्होंने गूगल को मोनोपोलिस्ट कहा और कहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि
और बाकी स्टेट्स को कि आप करेक्टिव मेजर्स लो, ठीक है। अगर वो मेजर्स लिए गए तो गूगल के बिजनेस में डिसरप्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग 300 बिलियन डॉलर का अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है गूगल। और गूगल ऑलरेडी 90% ऑफ द ऑनलाइन सर्च मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, 95% ऑफ द स्मार्टफोन सर्च मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो 10 साल की रेगुलेशन और ओवरसाइट जो है वो गूगल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या और कर सकते हैं गूगल की सर्च मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए? एक ओपन सर्च इकोसिस्टम बनाया जाए, ठीक है। गूगल को जो है एंड्रॉयड से डाइवर्स्ट कर दिया जाए, और जो है राइवल सर्च प्रोवाइडर्स को भी जो है वो जो है वो जो है जो एक्सक्लूजन करता है गूगल, वो रोकी जाए, ठीक है। गूगल को जो है वो क्रोम से भी डाइवर्स्ट किया जाए। गूगल को बैन किया जाए कि वो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स ना कर सके कंटेंट पब्लिशर्स के साथ। और गूगल क्या करता है, जो आपके एप्पल है, सैमसंग है, या फिर इन जो एंड्रॉयड के जो डेवलपर्स हैं, इनके साथ जो है वो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स कर लेता है कि उनके ही वेब ब्राउज़र्स को जो है वो, या उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स को जो है वो या सर्च इंजन को जो है वो डिफ़ॉल्ट रखा जाए, ठीक है। गूगल जो है एड और यूज़र साइड डेटा जो है वो 10 साल तक प्रोवाइड करे फ्री ऑफ चार्ज, तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो गूगल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा, कि और अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक रेडिकल इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और जो जज अमित मेहता हैं, उन्होंने अप्रैल में ये सुनवाई रखी है। अगर ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है तो गूगल को अपने जो है क्रोम को बेचना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, और जो है अपनी सर्विसेज को फेवर करना भी रोकना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 6 टूरिस्ट जो है वो लाओस में जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई बिकॉज ऑफ मेथेनॉल पॉइजनिंग। तो एक सीरियस और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जब मिथेनॉल गलती से अगर बॉडी में इंजेस्ट कर ली जाए, इनहेल कर ली जाए, या एब्जॉर्ब हो जाए स्किन से। तो इसमें होता क्या कि बॉडी जो है मेटाबोलाइज करने लगती है उसको हार्मफुल कंपाउंड्स में, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। और इससे जो है नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व्स और कई वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। और ये जनरली कब होता है, जो आप हुक कहते हो जिसको, या स्प्यूरियस लिक्वर कहते हो, उसमें क्या होता है कि इथेनॉल की जगह आपकी मिथेनॉल जो है वो डाली जाती है, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है वो लिवर एंजाइम्स जो है उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। तो डेंजरस लेवल्स ऑफ ड्रॉप देखने को मिलता है पीएच लेवल्स ऑफ ब्लड में, ठीक है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन, कोमा और डेथ हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल या फिर अल्कोहलिक ब्रीवेजेस जो अनवेरीफाइड सोर्सेज हैं उन्हें कंज्यूम ना करें। लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, कंज्यूम करने जो लोग कंज्यूम करने के लिए ससेप्टेबल हैं इलिसिट या फिर काउंटरफीट अल्कोहल। रेगुलर टेस्टिंग भी होती रहनी चाहिए अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की अनरेगुलेटेड मार्केट्स में, ताकि जो है ऐसी कंटेमिनेटेड बेवरेजेस कंज्यूमर्स तक ना पहुँचें, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रियांग ट्राइब, या फिर इनको हम ब्रू ट्राइब भी कहते हैं। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एथनिक रियांग ट्राइब है उन्होंने डिमांड किया है कि त्रिपुरा जो है होजागिरी डे पर हॉलीडे डिक्लेयर करे, ताकि जो ट्रेडिशनल होजागिरी डांस है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो रियांग ट्राइब, जैसा मैंने आपको बताया, कि ब्रू ट्राइब है बेसिकली, और ये ओनली पीवीटीजी है जो कि त्रिपुरा में रहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा ये नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि मिज़ोरम, मणिपुर या फिर इवन बांग्लादेश में भी जो है पाए जाते थे। और रियांग्स जो है वो सबसे पहले आए थे शैन स्टेट ऑफ अपर बर्मा से। इंडो मंगोलॉइड रेशियो स्टॉक है ये। इनकी लैंग्वेज जो है तिब्बतो बर्मीज लिंग्विस्टिक फैमिलीज को बिलोंग करती है। और ये वेल नेट एथनिक ग्रुप है। इनका रिजिड, वेल ऑर्डेन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है। प्राइमरीली ये एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुरु तेग बहादुर मार्टरडम डे जो है वो 24 नवंबर को हर साल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनका नाम पहले त्यागमल था, और वो 9th गुरु थे सिख रिलीजन के। उनके जो फादर थे वो 6th गुरु थे सिख्स के, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ओके। और उन्होंने ही जो है इनका नाम बाद तेग बहादुर जो है वो रखा था, ठीक है, चेंज करके। इनको हम हिंद की चादर भी कहते हैं या फिर शील्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने ही अनंतपुर साहिब जो है सिटी बनाई थी। ये जो लास्ट जो 2 सिख गुरु थे वो यहाँ पर ही रहे थे अनंतपुर साहिब में। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। और इनका अगर हम मार्टिरडम की बात करें तो मुगल्स ने इनको जो है अरेस्ट कर लिया था औरंगज़ेब के ऑर्डर पर, और इनको पब्लिकली बिहेड किया गया था 1675 में औरंगज़ेब के ऑर्डर के बाद, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नारसापुर लेस क्राफ्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फेमस नारसापुर लेस क्राफ्ट है उसको प्रेस्टिजियस जीआई टैग मिल चुका है। तो ये नारसापुर जो है सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर ऑन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहा जाता है कि विमेन जो है इस फार्मिंग कम्युनिटी की, इस रीजन की, उन्होंने हाईली अट्रैक्टिव आर्टिक्राफ्ट्स बनाने शुरू किए कलरफुल लेस से लगभग 150 साल पहले। और ये लेस वर्क जो है थिन थ्रेड्स के थ्रू बनाया जाता है, और ये थ्रेड्स जो है इनको वूव किया जाता है क्रोशे नीडल्स में के थ्रू। ओके, हैंडमेड क्रोशे इंडस्ट्री ही है ये बेसिकली नारसापुर की फेम्ड। और जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग बेसिकली एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन का एक टैग मिलता है, जिसमें कि डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं उस प्रोडक्ट की, रेपुटेशन है या उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसकी उस पर्टिकुलर जगह में होने की वजह से स्पेशल है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डोंगफेंग 100। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DF-100, जिसको डोंगफेंग 100 कहते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा दिया है। ये एक चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डिज़ाइन किया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए। ये मिसाइल जो एक लैंड बेस्ड सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर्स है। इसकी लेंथ लगभग 9 मीटर से ज़्यादा है। इसमें रैम जेट इंजन से ये पावर्ड होता है, और ये मैक 5 तक की स्पीड अचीव कर लेता है। मिसाइल जो है वो लगभग 30 किलोमीटर्स की हाइट तक जाता है आफ्टर लॉन्च, और उसके बाद ये टुवर्ड अपने टारगेट के जो है टुवर्ड्स टर्न हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is need for a global plastics treaty. This topic is important for your environment section. So representatives from over 170 countries have gathered in Busan, that is in South Korea, for the fifth and final round of negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution, including the marine pollution. So what is the background to it? So the United Nations Environment Assembly in 2022 met to pass a resolution to end plastic pollution, and an intergovernmental negotiating committee was formed to develop a legally binding instrument, that is a global treaty to govern plastic production and use across all nations. So in 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding treaty on plastic pollution by 2024, so as to reduce global greenhouse gas emissions from plastic production, use, and disposal. Okay, so the plastics global production. What is the need of this treaty? The plastics global production has doubled from 234 million tons in 2000 to 460 million tons in 2019, and by 2040, production is projected to reach about 700 million tons. Okay, so plastic decomposition, we all know that it takes about 20 to 500 years, with less than 10% recycled to date. Annual plastic waste generation is approximately 400 million tons, and it could increase by 62% by 2050. And a significant amount of waste leaks into rivers and oceans, which breaks down into harmful microplastics and nanoplastics. Chemicals in these plastics can cause endocrine disruption, cancer, diabetes, reproductive disorders, and even neurodevelopmental impairments. Okay, in 2020, plastic accounted for about 3.6% of global emissions, but now it has increased by 20%. It will increase by 20% by 2050 if the current trends persist. India is the largest contributor to global plastic pollution. Okay, so what is on the negotiating table with respect to this particular treaty? So the talks are aimed to establish global rules to tackle plastic pollution across its life cycle from production to disposal. Proposed measures include banning specific plastics, setting binding recycling targets, and regulating additives as well in the plastics. Okay, but countries are divided on key issues, including the production caps for plastics. For example, the oil and gas rich countries like Saudi Arabia, Iran, Russia, and India are opposing the strict production limits. But Rwanda, Peru, and EU, they are advocating aggressive pollution reduction, with Rwanda proposing a 40% cut by 2040 using 2025 as baseline. India is opposing restrictions on polymer production, and India is advocating for financial aid, technology transfer, and technical support as well. Decisions on harmful chemicals, in particular in plastic production, according to India, should be based on scientific studies and regulated domestically. Okay. So the next topic is Google Chrome. This topic is important for your governance section. So the US Department of Justice has said, and multiple other states of the US have proposed measures to address Google's monopolistic practices, including the possible sale of its Chrome web browser. According to the US District of Columbia judge Amit Mehta, uh,
Google is a monopolist and it has acted as one to maintain its monopoly. So, this antitrust case against Google is a significant legal battle which is centered around the company's alleged monopolistic practices, and primarily it is found in the search and advertising markets. This case involves multiple lawsuits which were filed by the US Department of Justice and several state attorneys generals as well. These lawsuits have accused Google of using anti-competitive tactics, and in 2020, the US Department of Justice filed a lawsuit against Google for the same. In August 2024, a federal judge ruled that Google has violated the Sherman Act by maintaining a monopoly in the search and advertisement market, and Department of Justice is considering breaking up of Google's business, including the Chrome, Play, and Android. Okay, the department is also suing Google for anti-competitive practices, and apart from that, it is seeking to determine if Google is using its power to edge out the competitors also. Okay, so what has happened in the recent years is that US agencies have accused major tech companies like Amazon, Meta, and Google of monopolistic practices, and the Department of Justice and with the other several states have sued Google in 2020 for maintaining dominance by paying companies like Apple and Samsung billions of dollars to prioritize Google for search queries on their devices. So in 2023 August, Judge Amit Mehta ruled that Google is a monopolist, and he has directed the Department of Justice and states to propose corrective measures. If these measures are implemented, then this would disrupt the Google's business, which is projected to generate about $300 billion in revenue this year. Google also holds around 90% of the online search market and 95% of the smartphone search market, and it could face 10 years of regulation and oversight by the federal court that ruled the company monopolistic. Okay. So, what are the proposed remedies for Google's search monopoly? So, the petitioners are proposing several measures to address the Google's monopolistic practices. First is to create an open search ecosystem so as to enable rivals to compete for consumers and advertisers. Google may be required to divest from Android also so as to prevent it from its use for excluding rival search providers. The proposal also calls for divestment from Chrome. Okay, Google should be banned from entering exclusive agreements with content publishers. Google should also be prohibited from owning web browsers like search competitors, query-based AI products, and other related ad technologies. Google must also provide rivals with ad and user side data for 10 years free of charge. Okay. Google's parent company, called the Alphabet, it has criticized these proposals as staggering, and it has accused the Department of Justice for pushing a radical interventionist agenda. So the judge Amit Mehta has scheduled the trial for April to address these proposals. And if these proposals are accepted, then Google may be forced to sell Chrome within 6 months, and the company would be barred from favoring its own services like YouTube. Okay. So the next topic is methanol poisoning. This topic is important for your environment and science and tech section. So recently, 6 tourists they lost their lives in Laos due to suspected methanol poisoning. And methanol poisoning is a serious and potentially life-threatening condition which arises when methanol is by mistake, which is basically an industrial alcohol, is ingested, inhaled, or absorbed through the skin. Methanol's toxic effects emerge after the body metabolizes it into harmful compounds like formaldehyde and formic acid. These byproducts can wreak havoc on the nervous system, optic nerves, and other vital organs. It typically occurs when the counterfeit or illicit alcohol, often containing methanol, is consumed instead of ethanol. In the body, methanol is metabolized by the liver enzymes, okay, and they form toxic byproducts. So what happens is that a dangerous drop in blood pH levels is witnessed. It can result into partial or complete blindness. It can also cause confusion, coma, or death. So that's why never consume industrial alcohol or alcoholic beverages from unverified sources. Government should also ensure the production and sale of alcohol adhere to the safety standards. We should also educate communities regarding the dangers of consuming illicit or counterfeit alcohol. Regular testing of alcoholic products should be done in unregulated markets as well. Okay, and if methanol is poisoning is suspected, immediately seek medical attention. Okay. So the next topic is Riang tribe. This topic is important for your social issues. So the ethnic Riang community has demanded that Tripura declare a holiday on Hojagiri Day, which celebrates the traditional Hojagiri dance. So the Riang tribe, which is also known as Bru tribe,
is the only particularly vulnerable tribal group residing in the state of Tripura. Apart from Tripura, they are also found in the neighboring states of Mizoram and few in Assam also. Ryangs are said to have come first from the Shan state of Upper Burma, also known as Myanmar now. Ryangs belong to the Indo-Mongoloid racial stock. Their language belongs to the Tibeto-Burmese linguistic family. They are a well-knit ethnic group. They have a rigid, well-ordained and well-structured self-governing system, and they are primarily agriculturists. Okay. So the next topic is Guru Tegh Bahadur. This topic is important for your art and culture section. So Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day was observed recently on 24th November, and Guru Tegh Bahadur's real name was Tyagmal, and he was the ninth of the 10 gurus of Sikh religion. His father and the sixth guru of Sikhs, the Guru Har Gobind Sahib Ji, changed his name to Tegh Bahadur. Uh, he was known as Hind Ki Chadar or Shield of India. He built the city of Anandpur Sahib, and here in Anandpur Sahib, the last two Sikh gurus lived, and where this is also the place where Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth in 1699. Okay, so Guru Tegh Bahadur Ji was first arrested by the Mughals on the orders of Aurangzeb in 1665, and he was publicly beheaded on his orders in 1675. Okay. So the next topic is Narsapur lace craft. This topic is important for your art and culture section. So the famous Narsapur lace craft has bagged the prestigious GI tag. So Narsapur is situated on the banks of Godavari River in the state of Andhra Pradesh, and it is believed that the women of the farming community of this region started creating highly attractive artifacts from colorful lace about 150 years ago. So this lace work is done using threads or thin threads, and these are again woven with thin crochet needles of varying sizes. Narsapur's famed handmade crochet industry produces doilies, pillow covers, cushion covers, bedspreads, table runners, and tablecloths, etc. Okay, so what is GI tag? GI tag is a sign used on products which have a specific geographical origin, and they possess those distinctive qualities, reputation, or characteristics due to the attributable to due to that place of origin. Okay. So the next topic is Dongfeng 100. This topic is important for your security section. So China has increased the range of its supersonic cruise missile DF-100, also known as Dongfeng 100, and it's a Chinese supersonic cruise missile. It is designed for precision strikes and features capabilities aimed at engaging in a wide variety of targets, and it includes land-based infrastructure, reinforced installations, underground bunkers, and large warships. So this missile is a land-based system with a range reportedly between 3,000 to 4,000 kilometers. So it has a length exceeding 9 meters. This missile is powered by a ramjet engine, and it achieves speeds of about Mach 5. Okay, this missile goes up to a height of 30 kilometers after the launch, after which it turns towards the target. Okay, its guidance system includes the inertial navigation, terrain matching, scene matching, and satellite positioning, also providing it high accuracy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.